This question, I hope this question I have given. So is it possible that have you solved this question? This question, what is the formulation? You will tell me. Who will tell me the formulation of this? Anyone? Anyone, please? No? Okay. Yeah, respond me please so that I have to follow and I have to go. आप अगर नहीं किया है तो भी बताइए, किया है तो भी बताइए. आप कुछ भी नहीं बोलेंगे तो मुझे क्या मालूम चलेगा, बताइए मुझे. एटलीस्ट मुझे रिस्पॉन्ड करिए. So I'm directly writing the solution here because the data are given. So I just let x1, x2 and x3 are decision variables, number of products ABC respectively. Number of products are, now see it is given in the question, number of products. So these are, it is given in the questions, products and this. So number of products are A, B and C, fine, respectively. So now come to then the actually this formulation will be, profit is given, so that must be the maximization case. Max Z equal to 3x1 plus 2x2 and then plus 4x3, subject to this will be 3x1 plus 2x2 plus 4x3 and it should be less than equal to 1800. You can match with the questions. Then 2x1 plus x2 plus 3x3 is less than equal to 2400. Then another constant it is given about x1, that x1 must be less than equal to 150 and must be greater than equal to 100. It is given. And the second is that the x2 must be greater than equal to 200. It is also given in the constants. X3 that should always be greater than equal to 50, and x1, x2 and x3 is all greater than equal to 0. So this is the formulation of this given questions. So I was expecting that everybody will do. Now come to, before going to the solution part, come to the different types of the solutions that is there. Wow. So solution, I'm writing here the notes, is very good notes regarding that. The solution, what is the solution? Solution means in terms of the linear programming problem, what do you mean by solution, right? So I'm writing definition, a set of values of the decision variables x1, x2 to xn, which satisfies all the constraints of the given LPP is called solution, right? So the solution means what? We satisfy all the constraints, and we also call come for the next part, that is called the feasible solution. So come to the feasible solution.
feasible solution. हाँ गुड आफ्टरनून मैम जी. हाँ 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 मेरी क्लास है 4 से 5 कर सकते हैं. हाँ ठीक है. हाँ a set of the values, a set of values of the variables. क्लास चल रही है. of the variables x1 x2 to xn which satisfies all the constraints of a given LPP and also the non-negative constant, non-negative restrictions. So what is the difference between solution and feasible solution? Non-restriction condition. Who will tell me difference between this? Yes. Who will tell me what is the difference between Vishwajit Giri? Okay, right. Is Sarthak Duggar is there in the class? Sarthak Duggar. Yeah, Sarthak. Duggar. Sarthak Duggar. He is in the class but not responding. Sarthak Duggar, respond please. Yes, Sarthak. So tomorrow I'll be in the classroom also. Yeah, Bishwajit. Yes, sir. Okay. So Sarth is not responding. What is the problem there? You know him? Yeah, Bishwajit, can you tell me what is the difference between solution and feasible solution? सर मैंने अभी ज्वाइन किया, आप बता दें. अच्छा. Who will tell me? सर एक बार रिपीट करेंगे डिफरेंस बिटवीन Solution and feasible solution. दोनों में क्या डिफरेंस है? आदिति. तो फीजिबल सॉल्यूशन मतलब जिसमें जो कंस्ट्रेंट्स है वो सैटिस्फाइड है. कांस्टेंट तो उसमें भी सेटिस्फाई होता है, सोल्यूशन में भी ऑफ द गिवन एलपीपी. Yes. Devanshi, can you tell me the answer, please? Sir, feasible solution में non-negative constraints are also satisfied. Non-negative. But in Yes. solution, they are not satisfied. Only the constants they can satisfy the value, because when you take the value, now see here, if you take the value x1 equal to -1 and x2 equal to 3, so x1 plus x2
this is greater than this, or for maximization case, this is less than equal to 5. Yes, it satisfies or not? Yes. If x1 taking -1, x2 is 3, so does this satisfy the constraints? Yes, sir. Yes. But x1 and x2 are all greater than equal to 0? No. So if it satisfies only the constraints, then we call the solution of the given program linear programming. But if it also satisfies the inequality constraints, this positiveness means non-negative restrictions, then such solution is called the feasible solution. Getting my point? ये बच्चे respond नहीं दे रहे. Okay. Yes, sir. Okay. So now come to the basic solution. This is very important definition, and generally I ask in the exam, what do you mean by basic solution? What is the mean by basic feasible solution? So basic solution, what is mean by that? So definition is, if there are m equation, if there are m equations in n variables, n is greater than m, then now see m equation and n variables, right? Then a solution obtained by solving m equations exactly for m variables, right? And putting the rest remaining, that is remaining means n is greater than m, so n minus m, and variable equal to 0 is called basic solution. Is called basic solution, provided all the vectors means the variables here, the vectors associated with non-zero variables are linearly independent. आपको लीनियर अलजेब्रा EM1 में पढ़ाया होगा. लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्या होता है? अगर A1 x1 A2 x2 या U1 A1 U1 A1 A2 पुट करते हैं, हम इक्वल टू 0 करते हैं, if at least one value of U is 0, then it is called not if all values 0 this is independent, and if it is at least one value of the vector is not non-zero, then it is dependent variable, linearly dependent we call it. So this is the definition of that for the basic solution. Then come to the basic feasible solution. Basic feasible solution. Feasible solution. A feasible solution. A feasible solution which is basic also, that is also satisfies non-negative restrictions. Okay, so this is called the basic feasible solutions. Now come to, so I have explained in the graphical way, we got tabular form also there.
So in the graphical way, I've already explained what is the solution means. Now see, we have the graph here and we are plotting the graph number 1. This is the equation for the constraints. So when you draw these equations, we have for minimization case, z equal to minimum, we have the number of infinite solutions are there, right? So objective function is that that has to minimize the cost. We have at this point. We have at this point. So these are the points. These are the corner points. Corner points where our solution exists. So these are called the so infinite infeasible solution, and there are certain points or a point here or a point here that satisfy the objective function, and that is called the optimum solution. So in case of maximization, max z case, if you have a equation like this, and you have inside this closed bound, so this is called the feasible region, and we have a number of solutions. This is called the feasible solution. All the feasible solutions are there. Feasible solution because the value of x1 and x2 must be positive, and it is satisfy the inequality constraints, right? So these are called the feasible solution in the feasible region. Then come to optimum solution. Optimal solution. We define it a basic feasible solution. A basic feasible solution of a LPP which optimizes either max or minimum the objective function. Right? It's called optimal solution. Fine. Then there is one important solution that is called the unbounded solution, and you have to explain. Generally, I have also asked you this question, trying to unbounded solution. Unbounded solution. So if now see unbounded solution means, before going to that, we try to understand what actually the unbounded solution. Suppose we have a constant like this, x1, this is for 1 constant, and this is x1, this is x2, and we have another constants, I call it x second constants. And if now see, for example, taking the example, max z equal to 2x1 plus x2 subject to constant x1 plus x2 is greater than equal to 3 or 15, x1 plus 2x2 greater than equal to 10, and x1 and x2 greater than equal to 0. So when you draw this equation, since now see, the greater than sign means the feasible region will lie above this line. Greater than sign, this indicates that the feasible region will lie above this line. So your feasible region will be this one. Your feasible region will be feasible region, right? These are the feasible region where your solution exists. So is there any value of x1 and x2 which can maximize the profit? Maximization means we are going for the infinity. So is there any value of x1 and x2 goes to infinity and your profit become infinity? Is it possible? Yes, tell me. Hello.
शुभम, शुभम इज देयर? सर मैं हूँ। बताइए शुभम त्रिपाठी, शुभम के ऐसा कोई वैल्यू हो सकता है फिजिबल रीजन में जिसकी कांस्टेंट, जिसकी जो प्रॉफिट को इन्फिनाइट कर दे? नहीं सर। इन्फिनाइट प्रॉफिट हो जाए तो फिर मजे आ जाए, नहीं? पैसे डाले और पैसे इन्फिनाइट हो जाए, नहीं? फिर जमा करने की जरूरत ही नहीं है, रखने की जगह चाहिए बस है, हैं? सर ये तो आप बात ही फिजिबल वाली नहीं है, प्रॉफिट इनफाइनाइट वाली। ओके, तो देखिए आप इससे सिचुएशन देखिए आप, दैट मीन्स यहाँ पे क्या मतलब हुआ? अगर ये मिनिमाइजेशन होता तो हम कह सकते थे कि मिनिमाइजेशन में कहीं यहाँ या कहीं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी, है ना, कहीं भी। लेकिन यहाँ कह रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम का मतलब ऊपर जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इन्फिनिटी में। So this kind of means the first visible solution which makes the profit infinite and the value become the infinite, the feasible region will be unbounded, then the solution is called unbounded solution because we don't have the bound there, right? So how to write it? Just writing the definition: if constraints passes through the second, third or fourth quadrant and there are no points that simultaneously satisfies all constraints in the problem, then such situation form unbounded solution. So here the maximization of z is goes to infinity, right? In the graphical term, in graphical method, if objective function is of max case and inequality constants are of greater than or equal type, then unbounded feasible region will exist. And solution will be called will be an unbounded solution. ठीक है? बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे लाइन में ऐसे ड्रॉ किया, लाइन ऐसे आया, ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो गया. So there are many cases. I will show you with example. Then the last solution type, that is called the infeasible solution. Any doubt, please tell me. नहीं सर, क्लियर है. Okay, infeasible solution. What is infeasible solution? ग्राफिकल में अलग होता है और टेबल में जब when you apply the simplex method, you will get the infeasible solution. That is there is another condition. But the definitions are there are no points which
simultaneously satisfy all constants in the problem. Common region do not develop in the first quadrant. Objective function does not pass through any point of all the constants मैं आपको इसका ग्राफिकली थोड़ा विजुअल दिखाऊंगा कल मैं, है ना. विल शो यू विजुअली. देखिए एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं. जैसे मान लिया आपके पास एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स को ड्रॉ किया आपने, और ये पहला इक्वेशन है, इसका फिजिबल रीजन इसके नीचे लाई कर रहा है. दूसरा इक्वेशन ड्रॉ किया आपने और ये इक्वेशन ऐसे आया, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इसका फिजिबल रीजन ऊपर आ रहा है ना, एक लेस देन का एक ग्रेटर का है. तो आपका फिजिबल रीजन कहाँ पे होगा? कॉमन फिजिबल रीजन. यस, नो कॉमन feasible region, है ना, no common feasible region, so solution is infeasible. yes, बताइए. रिस्पॉन्ड करिए. ये मत पता है मुझे कि थोड़ा नींद आ रही होगी आप लोगों को. नहीं सर, नींद नहीं आ रही सर, क्लियर है. अच्छा, क्लियर है, वेरी गुड. सार्थक से अभी तक मेरी बात नहीं हुई. ही हैज जॉइन्ड टुडेज फर्स्ट क्लास. जैसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको. एग्जांपल मान लिया कि दिस मैक्सिमम z इक्वल टू -5x2 + x1 और x1 + 5x2 subject to constant x1 + x2 less than equal to 1 and 0.5x1 + 0.5x2 greater than equal to 10. So ऐसे केस में बहुत मुश्किल है, यानी कि you cannot find, है ना, and x1 x2 greater than equal to 0. So this will always give you the infeasible solution. Fine. उसी तरह से एक एग्जाम्पल और है, जैसे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ. एग्जाम्पल लिया है एग्जाम्पल 2 में. जैसे मैक्सिमम z दिस इज इक्वल टू x1 + x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x1 + x2 less than equal to 1 -3x1 + x2 is greater than equal to 3 and x1 x2 greater than equal to 0. जब इसको ट्रेस करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे आप इसका, तो आपको ऐसे ग्राफ आएगा. देखिए, एक तो आएगा ऐसे, इसका फिजिबल रीजन ये आ जाएगा. दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये ऐसे आएगा, है ना, और इसका फिजिबल रीजन ये आएगा. देखिए कितना मुश्किल है. दिस इज नो कॉमन फिजिबल रीजन, सो दिस इज द कॉल्ड द इनफिजिबल सॉल्यूशन. यस, सब लोग बताइए मुझे, कहीं डाउट आ रहा हो तो. ठीक है सर. हाँ सर. ओके, वंशिका.
Vanshika is there. Yeah, is there any doubt? No, sir. Okay, fine. Sambhavi? Sambhavi? No doubt, sir. No doubt, sir. Good. So these are the kind of the solution that exists in the when you solve the linear programming problem. Such kind of solution will be there, right? So this one solution is called the degenerate solution also, right? So we'll go for the degenerate solution also. Degenerate solution कैसे ब्रेक करेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा कि how is less than the number. We come to the last degenerate basic feasible solution. Last definition, and this is called degenerate basic feasible solution. Degenerate basic feasible solution. Fine. So the definition is a basic feasible solution. A basic feasible solution in which number of non-zero variables is less than the number of requirement constants in the given LPP is called degenerate basic feasible solution, DBFS. So जब इसके नोमेनक्लेचर कराएंगे तो आपको बताएंगे इसको कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे सारी चीजें. Now come to the solution part. So solution method of LPP. इसके लिए पहला है हमारे पास ग्राफिकल मेथड. ठीक है. देखिए यहाँ पे हाउ द ग्राफिकल मेथड विल बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, पहले थोड़ा आसान क्वेश्चन, फिर थोड़े मुश्किल क्वेश्चन, है ना. पहले इजी फिर थोड़ा मुश्किल. चलो देखिए मैं किस तरीके से करा रहा हूँ एक क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखिए. आप शुरू करें ना. ग्राफिकल मेथड. यस. Yes, sir. Okay. So graphical method, question number 1, graphical method, how we can apply, just go for that. Question number 1, solve the given LPP by graphical method. देखिए इसको कैसे करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट है मैक्सिमाइज, दोनों क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमाइज का भी मिनिमम का भी. मैक्स z इक्वल टू 20x1 प्लस 30x2 एंड सब्जेक्ट टू 3x1 3x2 लेस देन इक्वल टू 36, 5x1 प्लस दो इक्वेशन वो कराते हैं. आप लोग ग्राफ पेपर यूज करिएगा घर पे सॉल्व करने के लिए, और
पेंसिल वगैरह यूज करिए या पेन यूज करिए, बट ग्राफ के स्केल यूज करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। 5x1 प्लस 2x2 इज देन इक्वल टू 50, 2x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 60, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपका 20, 30, 3, 3, 36, 5 to 50, 2, 6, 60, 2, 6 and 60, है ना? ये क्वेश्चन है। सो किधर क्या करते हैं देखिए, समझ लीजिए यहाँ पे सोल्यूशन में। व्हेन यू गो फॉर द सोल्यूशन, हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ये सिर्फ इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स के लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, सिर्फ यहाँ तक का, ठीक है, ओनली इनइक्वालिटी कांस्टेंट पे, जो भी इनइक्वालिटी कांस्टेंट दिया होगा उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले नंबर 1, इसको हम क्या करते हैं, चेंज द इक्वालिटी कांस्टेंट, यहाँ लिखते हैं नंबर 1 में चेंज इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स इनटू an equation, है ना, and obtain the coordinate points, coordinate points। देखिए बहुत सिंपल है। जैसे पहला है हमारा, पहला इक्वेशन है 3x1 प्लस 3x2 इक्वल टू हम 36 कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। और इसका सबसे आसान तरीका है पॉइंट्स निकालने का। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितनी पॉइंट चाहिए मिनिमम, बताइए। यस, सर 2 पॉइंट्स चाहिए Two. मिनिमम टू ड्रॉ लाइन। 2 पॉइंट चाहिए। तो अगर मैं इसमें x1 में 0 कर दूं तो x2 कितना हो जाएगा 12, और x2 में 0 कर दूं तो x1 कितना हो जाएगा 12। कितना इजी है, 2 पॉइंट आ गए ना अपने पास, x1 x2 की 0, 12 बट 12 0, ठीक है। उसी तरह से we can have this 5x1 plus 2x2 equal to 50, equation number 2। Draw this x1 and x2, so 5 and 2, so when you put x1 0, बहुत इजी होता है। लेकिन ये माइनस के टर्म में अगर होगा इक्वेशन, if 5x1 minus 2x2 हो, समथिंग हो, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी रहता नहीं है, है ना, बिकॉज x1 में x2 अगर माइनस में होगा और x1 0 पुट करेंगे तो x2 0 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, बिकॉज वाई पॉजिटिव, बिकॉज वी आर गोइंग ओनली टू ड्रॉ द लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस, so when you put x1 here 0, this will be 25, and when you put x2 0, this will be equal to 10, ठीक है। Then what is the third equation? What is the third equation? विश्वजीत, थर्ड इक्वेशन क्या है? Hello, sir. Yes, sir. I am going to stop this presentation, so tomorrow we'll go for that, right? Thank you. Thank you, sir.